finally, there has been some movement forward. The CBI has taken over the case. And in another important development today, it was the Allahabad High Court Lucknow bench which heard this case. For the family was brought, in fact, for this hearing early in the morning from Hathras. They were taken to Lucknow. The Lucknow bench of the High Court is learned to have expressed their displeasure over Uttar Pradesh police action in the case. Victim's kin also expressed dissatisfaction at the way the cremation took place. 5 members of the victim's family arrived from Hathras early this morning to depose before the court. The top government and police officials who were summoned by the court were also present during the hearing. Taking a suo motu cognizance of the incident, the High Court bench had on October 1st asked the woman's family to apprise the court of their version of the assault. The court has also summoned the UP Additional Chief Secretary, DGP, ADG Law and Order, as well as the District Magistrate and the Superintendent of Police of Hathras in the case. वहाँ पर 2 से 300 जो है वो पुलिस के लोग थे। इतना ज़्यादा तो लॉ एंड ऑर्डर तो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता था और आपने बॉर्डर भी सील कर दिए थे। फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब होता? अगर होता तो उसको आप कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन एक बेटी का जो उसका राइट था कि उसको डिग्निटी के साथ उसका अंतिम संस्कार हो, वो परिवार को नहीं करने दिया। परिवार कितना इमोशनल ट्रॉमा में है। पीड़ित पक्ष के परिवार के सारे लोग कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने उनसे पूछताछ किया है। एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस, उनसे भी कोर्ट ने पूछताछ की है। डिटेल्ड ऑर्डर अभी बाद में पास होगा। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, अभी 2 नवंबर के। All right, going across to my colleague Kumar Abhishek, who is joining us with more details on this. Kumar, was the Uttar Pradesh government in any way able to give any satisfactory answers to these questions raised by the court and the family of what was the need to, in fact, go in for that hurried cremation of the girl? What is it that the court has said today in conclusion? Well, absolutely, Ankit. The only argument which the Uttar Pradesh government has today was only that, you know, in order to maintain the law and order situation in Hathras that night, they took that decision and they had to do it. There were no option in front of them. That's what they were saying. But court has asked the, the family members about, are you satisfied with the way this whole case has been handled? They were, patiently being heard, and every statement was recorded and the family has made it clear that they are not at all happy with the fact that how the police has handled this whole situation. They were not allowed to touch the body, not even to enter the premises. They also said that, the kind of pressure was being built by the DM, and that's the reason that the court has asked the Additional Home Secretary along with DGP was there, and also the DM Hathras. So certainly court has taken a strict action. Now on 2nd of November, the government will put their statement there and they will answer all these questions and will be telling what they have done and how they are going to ahead with it. But the family will not be coming on the next hearing. But until then, it is a very important development that High Court has shown great discontent about the fact that how this whole case has been handled. Yes. And there is, that's just not the High Court. The Supreme Court had also expressed its shock on the entire way this entire case was handled by the Uttar Pradesh police and the administration. Thank you, Abhishek Mishra, for joining me with all those details coming in from the Lucknow bench of the Allahabad High Court. Now, if you remember on Friday, we brought you some very shocking details, expose on how the police had themselves, the local police had themselves, in fact, accepted that there were glaring lapses in the initial investigation in the Hathras case. India Today now brings you the testimony of the victim's aunt, who says that the main accused, Sandeep and his friends, this is not the first time that the things went out of hands. In fact, the accused used to regularly stalk, misbehave and intimidate the victim even before the horrific incident that took place in Hathras. Take a look at this investigation by India Today. अच्छा
अच्छा ये बताओ सर, आप अपनी तरफ से नेग्लिजेंस क्या मानते हो उसमें पूरे केस में? नेग्लिजेंस नहीं हमारा तो वही ठहरा है, तुम साथ नहीं गए, देखने नहीं गए, इलाज नहीं कराया तुमने, सिपाही नहीं भेजा, ये नहीं और मेरे सबसे नाम भी बढ़ जाते, धारा ना बढ़ाते, वो भी गैंगरेप नहीं बढ़ाना चाहिए, गैंगरेप गलत पढ़ा दिया। Confessions about glaring police lapses caught on tape. We take our investigation to the next level. कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले, लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा। Remember, in her video statement, this Dalit victim alleged her attackers and attempted to rape her before as well. India Today sets out to probe her accusations. In her village at Hathras, we meet this family. Their daughter was a close friend of the Dalit teen. Both cousins would confide in each other. Her daughter, still minor, the homemaker agreed to speak to a special investigation team. The woman, also the victim's aunt, and her husband insist one of the jailed suspects, Sandeep, would stalk their niece, harass and catcall her often. This woman also said her father had complained to Sandeep's father about his son. According to this family, they witnessed the suspect's inappropriate behavior. और पहले भी छिड़कानी करी उस लड़के ने, नहीं हम बयान पक्का दे रहे हैं। संदीप ने छिड़खानी करी पहले? हाँ पहले भी करी थी, हम पक्का दे रहे हैं। नहीं आप ऐसे कैसे कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं, जब हमने देखा जब ही तो मजबूरी यही है उनकी, हमें सब इसी पे जा रहा है। से पहले से उस लड़के ने हमारे लड़के के साथ बदतमीजी करी, संदीप ने बाजार जा रही है भाजाई के साथ, तो हमारे लड़के का हाथ पकड़ा बीच बाजार में। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। संदीप के साथ करता था? हाँ। एक तो बताया कि वो बाजार में हाथ पकड़ा। हाँ। और संदीप और ने यहाँ पे जाती थी रास्ते में तो छिड़खानी करता था। एक बार जा रहे में लड़की जा रही दुकान पे सवेरे यानी कुछ सामान लेने के लिए, तो घूमना लड़की का हाथ पकड़ लिया, फिर वो चला गया था। तो ये कितनी बार हो चुका था ऐसा के साथ? 2-3 बार कांड हो चुकी है। अच्छा ने कभी आपसे कहा कि मुझे तंग करता संदीप? सबके सामने कहा आपसे? सबके सामने बोलती थी। भैया से भी घर में भी बोली थी। झगड़ा हुआ इसी बात के पीछे। तो किसके घर में झगड़ा हुआ? इनके संदीप के, उसके गुड्डू, संदीप का बाप का नाम गुड्डू है। तो हमारे प्रकाश भाई जाते थे, भैया तुम ठाकुर हम हमारी बहन बेटी की क्यों बेइज्जती करा रहे हो, बच्चे को समझा लो। तो उसका बाप उसे मारते पीटता था, भगाता था। अच्छा बाप ने मारा था ऐसे? बाप ने मारते थे, घर वाले ही मारते। झूठ क्यों बोले भाई, हमसे कोई लड़ाई नहीं उनसे, घर वाले परेशान थे, सब वो लोग बोलते थे चला जाए कि मर जाए। किसी बेटी को The woman also alleged that another suspect, Love Kush, boasted about having sexually assaulted her niece before he was arrested. बच्चों ने हमारे ने पकड़वा दकड़वाई सारे तो कहने लगे वही लड़के, तुमने हमारा कुछ कर लिया, चीर दिया, फाड़ दिया, बलात्कार कर दिया, तुमने हमारा कुछ कर दिया। छोटे बच्चों थे। क्या 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 क्या? चीर दिया, फाड़ दिया, सब बलात्कार कर लिया उसके साथ हमने। तुमने कुछ करा हमारा? कौन बोला ये? वो ही लड़का लवकुश। We now probed another witness who claims to have visited the crime scene after the attack. This elderly woman says she saw the victim lying on the ground in the field. According to Vitoli Devi, she named Sandeep as her attacker as fellow villagers stood around in shock. आपने देखी लड़की को? कहाँ देखा? मैं खेत में होश में थी, बात कर रही थी? होश में ही बात कर रही थी? हाँ बात कर रही। आपने क्या पूछा उससे? हमने घटना पूछी, बाकी भाई ने पूछी जाए क्या? जो पूछी के जितने किन्ने हार करो किन्ने करो, तब माने कही के संदीप आने। जब भाई ने पूछा उससे कि किसने तेरा हाल किया है, हाँ। तो उसे लड़की ने क्या कहा? संदीप आने। संदीप ने। बस उस समय सबके सामने बोली। सबके सामने बोली। उसके बाद फिर उन लोगों ने क्या किया? हाँ चुप रह गए सब। Over the investigators to collect enough evidence as thousands campaign for an end to sexual violence. With Jamshed Khan and Nitin Jain for India Today's Special Investigation Team. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.